गुड इवनिंग पिलाने केमती अच्छो सब किए किए अच्छ बहुत कम पिला अच्छ के जन अच्छा जी अच्छा ओके तो आज आम पढ़ा लास्ट पार्ट ऑफ योर रिप्रोडक्शन चैप्टर लास्ट पार्ट पढ़ा दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस ओके सो टुडे विल स्टडी एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियोजेनेसिस माने कौन तुम एम्ब्रियोजेनेसिस माने हला डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो दिस इज द डेवलपमेंट of embryo from a single cell zygote. You know students, zygote is a very unique type of cell. Zygote is a very unique type of cell. It's a type of stem cell. It's a type of stem cell you can call it as. और जाइगोटा कौन ना जाइगोटा गोटे टोटीपोटेंट सेल तमें जो टोटीपोटेंट सेल माने वन सेल कैन गिव राइज टू मेनी टाइप ऑफ सेल आम पढ़ी टोटीपोटेंट सेल पढ़ी सेल थ्योरी सेल जो पढ़ी साइटोलॉजी जो भी डिस्कसन यहाँ होता मुझे करी तो जो टोटीपोटेंट सेल माने वन सेल कैन प्रोड्यूस मेनी टाइप ऑफ सेल दैट इज टोटीपोटेंट सेल जोटा आमर कोड मिले ना आमर बोन मैरो भीतर अच्छे टोटीपोटेंट सेल अच्छे बोन मैरो सेल्स से भाया जाइगोट गोटे टोटीपोटेंट सेल बिकज यू कैन जस्ट इमेजिन गोटे जाइगोट रु आज ए इंडिविजुअल वी डेभलप आम डेभलप होचे आमर एक्टोडम अच्छी मेजोडम अच्छी एंडोडम अच्छी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स अच्छी डिफरेंट टाइप ऑफ ओरिजिन से ऑर्गन गुड़ार अच्छी different type of cells अच्छी all cells are developed from a single cell origin that is the zygote that's why the best example of totipotent cell is a zygote okay so last class रे हमें कौन पढ़ी थिले हमें till the formation of zygote पढ़ी थिले zygote केमती फॉर्म हैला से विषय रे हमें पढ़ी थिले fertilization पढ़ी थिले स्पर्म टिके जो रिमाइंड कर दोची स्पर्म आसिला ओभम पाखु आसिला तापर ओभम रे फर्टिलाइज कला स्पर्म लाइसिन ओभम रो वाल को डिजोल्व कला तापर ओभम भितर कॉर्टिकल रिएक्शंस हैला तापर कोन हैला ना गोटे स्पर्म खाली एंट्री करि पारला तार मटेरियल कोन मटेरियल एंड कला ना स्पर्म रो प्रोन्यूक्लियस एंटर कला एवं तार कोन एंटर कला ना तार सेंट्रोजोम एंटर कला ओभम भितर को सेंट्रोजोम गला परे मेटाफिजिक स्टेज रे अटकी के रहिथिबा सेकेंडरी ओसाइड ताकू कौन कराला ताकू ओभम बनेला और ताकू ओभम बनला परे तार ता सहित फ्यूज है आमर स्पर्म प्रोन्यूक्लियस एंड से ओभम रो जो प्रोन्यूक्लियस सेटा फ्यूज है फ्यूज होगी कौन ला टू वेल और एटा गोटे जाइगोट बनला परे पुणी कौन हम तापर कौन हम ना जाइगोट बनला परे तापर जो स्टेजेस हम दैट इज योर एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट रु केमती हमें एम्ब्रियो बनेबा हला सो जस्ट फर्टिलाइजेशन हला परे आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन हम there will be lot of cleavages happens or occurs to the zygote तापर बहुत गुड़े क्लीवेज ऑफ जाइगोट रे लॉट ऑफ क्लीवेज हम क्लीवेज माने जाइगोट इज डिवाइडेड इनटू multicellular structure it is a single cell structure but it is further divided into multicellular structure a ball like multicellular ball so that division it gives rise one cell gives rise to many type of cell but why it is called cleavage हमें कहि परथांते जाइगोट अंडर को सेल डिवीजन कहि परथांते किंतु एडी हमें क्लीवेज कहले सो डिफरेंस बिटवीन क्लीवेज एंड सेल डिवीजन कौन ना सेल डिवीजन रे कौन हुए ना तुम देखि सेल डिवीजन रे कौन हुए ना साइटोप्लाज्म डिवाइड हुए नहीं माने वन सेल गिव राइज टू सेम टाइप ऑफ सेल वन सेल गिव राइज टू टू टाइप ऑफ सेल इन माइटोसिस माइटोटिक सेल डिवीजन जब नबा वन सेल गिव राइज टू टू सिमिलर सेल इन माइटोसिस बट एडी कौन हबो दिस इन दिस केस क्लीवेज व्हाट हैपन दिस साइटोप्लाज्म विल नॉट इंक्रीज
the nucleus going on dividing, and that amount of cytoplasm is distributing within themselves. So nucleocytoplasmic ratio जोटा जोटा कि आमर नॉर्मली कांस्टेंट रहा कथा सेल डिवीजन रे क्लीवेज रे कौन हुए न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियोटा कौन हुए बड़ी 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 की चले कहीं साइटोप्लाज्म से तो कम कमी जाए तो न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म तार रेशियोटा बड़ी बड़ी चले. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेल डिवीजन एंड क्लीवेज. सो फर्टिलाइजेशन पर क्लीवेज हम तो फास्ट अच्छी देख कौन ना फास्ट अच्छी सिंगल सेल जाइगोट. दिस इज ए 2n सिंगल सेल जाइगोट. जाइगोट कौन कला this zygote after 30 hour of fertilization hela pore zygote hela after 30 hour of fertilization this zygote is divided into two cell and by cleavage. And how the cleavage happens, just see here, it is a complete cleavage, so it is called as holoblastic cleavage in our case. This give rise to two cell. This zygote divided into two cells. They are still intact. They are still attached to each other, but they divide into two cells after 30 hours. Then after 40 hours, similarly, you will get 4 cell structure. Similar type of division, 4 cell structure. And after 3 days, you see it is 4, 6, 8, 8 to 16 cell structure. So what happened? After 30 hours, it divided into 2 cell structure, then it is 4 cell structure, then it is 8 to 16 cell structure. By that time, by that 3rd day and 4th day, by 4th day, it reaches uterus. ता माने कौन फैलोपियन ट्यूब रे कोड हैला हमर एम्पुला रे हमर फर्टिलाइजेशन हैला. फर्टिलाइजेशन हैला पर एम्पुला रे एटा कोन गला धीरे धीरे एम्पुला रो ट्रैवल करके टुवर्ड्स यूट्रस आसला. मतलब यूट्रस को टुवर्ड्स आसीबो हमर ट्रैवल करके तले आसीबो सेही पीरियड भितरे ए मल्टी सेलुलर माने डिविजन्स होथिबो और क्लीवेज हेई चलथिबो. क्लीवेज हे कि यूट्रस रे पहुंचला को 4th डे रे यूट्रस रे एई स्टेज रे से पहुंचिबो. 16टा 8 to 16 सेल स्टेज रे यूट्रस रे पहुंचिबो. एंड at that stage it looks like a, and it further grow and it looks like a bunch of grapes. Multiple cells are there, so it looks like a bunch of grapes, or it's mulberry like, it's like a bunch of mulberry. So at this stage it is called morula. At this stage it is called morula. Morula is developed from the term mulberry. It is developed from the term mulberry. Morula is basically, it is a 16 to 32 cell stage. It is called morula. Okay. Then after that, by the end of 8th day, it is again termed into approximately 64 cell structure. This is a 64 cell structure called blastocyst, blastula or blastocyst. So 8th day बेलू कौन एटा चेंज हो कौन ब्लास्टोसिस्ट रे. एंड ब्लास्टोसिस्ट एप्रोक्सीमेटली 64 32 ରୁ 64 सेल हे गला को इट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट. एंड एट दिस स्टेज ए ब्लास्टोसिस्ट स्टेज रे एट दिस स्टेज it get implanted in the uterus. एबे ब्लास्टोसिस्ट स्टेज रे कोन हबो एटा यूट्रस रे ए ब्लास्टोसिस्टा यूट्रस रे
इम्प्लांट हम है यूट्रस रे इम्प्लांट हो धीरे 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 यूट्रस रे जो एंडोमेट्रियम अच्छी है और इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस लिखिपर कौट इम्प्लांट हम एंडोमेट्रियम जोटा को डेसीडुआ बोली भी कहती है तो एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस रे इम्प्लांट हो सो 64 सेल स्टेज रे एंडोमेट्रियम रे इम्प्लांट हो गला सो ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज नाउ व्हाट हैपन gradually what happen that it form a pit like endometrium suppose it has endometrial lining suppose this is endometrial lining and this cell blastocyst this embedded here and gradually what happen it form a pit over the endometrial lining it pit over the endometrial lining and gradually it deep in and finally it will totally enter into this endometrium finally you see it totally it is there inside the endometrium it is totally there totally buried into the endometrium then lot of changes happen to this blastocyst that we will discuss now तापर ब्लास्टोसिस्ट रे कौन कौन चेंजेस हम आम डिस्कस करवा तो बुझीला यहाँ मुझे लिभेबी पूर्व जस्ट कहीदिए फास्ट है आमर जाइगोट इट इज ए 2n स्ट्रक्चर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट first day of just after fertilization zygote then after first day one day approximately 30 hours one day it will become 2 cell structure by the process of cleavage and after cleavage these individual cells are called blastomeres so this zygote develop into 2 blastomere after 2 day 1 day after approximately 2 day or 40 hours it will become 4 blastomere then 3 day 8 to 16 blastomere and by that time 8 to 16 blastomere it reaches the uterus and in uterus it develop again 16 to 32 cells it looks like a mulberry stage it is a so it is called as morula stage and after the morula is further divided into a 64 cell stage that is called blastula or blastocyst then the blastocyst is the stage where it is implanted or it is buried into the uterus and during this blastocyst stage only the zona pellucida earlier there is a membrane you can remember जोना पेलुसिडा गोटे मेम्ब्रान थिला ओभम उपरे जोटा कवर कर रखुला सेटा ए पर्यंत थिबो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जेतले आसला जेतले एटा बरीड हे गला यूट्रस रे तापरे जोना पेलुसिडा डिजल्व हे जो अदरवाइज काले मे बी एटा यूट्रस रे इम्प्लांट न होई आउ कोड इम्प्लांट हे जिवो सर्विक्स रे इम्प्लांट हे जिवो हला कि अदर को पार्ट रे तमरो कोन कोंती फैलोपियन ट्यूब रे इम्प्लांट हे जिवो ताकू चेक करथिबो कि जोना पेलुसिडा बहुत थोड़ा क्वेश्चंस आसे यार प्रॉपर इम्प्लांटेशन जाइगोट प्रॉपर इम्प्लांटेशन किए गाइड करे और हु हेल्प द जाइगोट टू इम्प्लांट एट प्रॉपर प्लेस मीन्स आर द यूट्राइन एंडोमेट्रियम दैट इज द जोना पेलुसिडा तापर जोना पेलुसिडा डिसअपियर हो तापर लॉट ऑफ चेंजेस विल हैपन सो टिल नाउ इट इज क्लियर नाउ विल सी व्हाट द चेंजेस हैपन टू दिस ब्लास्टोसिस्ट ओके लेट्स सी Now your blastocyst is ready. Now this blastocyst what happen? This blastocyst develop a cavity. This blastocyst develop a cavity. Okay, and it is developed into 2 layer of cells. See, there is a outer layer of cell. This blastocyst that is the outer layer of cells like this. You can just see. This is a outer layer of cell. This blastocyst, this cellular differentiation happens here. 2 layer of cells are formed. Then
another just below near the animal pole or embryonic pole, you will find another mass of cell. So this blastocyst is divided into two patches of two layer of cell. One layer outside this green color cells and another mass over here. Mass over here. So this, and it encloses a cavity. This is a cavity. So this cavity is called as blastocele. This cavity, you develop a cavity that is called as blastocele, and this two layer, this layer, outer layer is called as trophoblast. And this inner layer, this mass is called inner mass cells, or you can call it as embryoblast cells. आरंभ एठू है देख पिला माने एठू आरंभ है फास्ट गोटे बंच ऑफ सेल थिला गोटे मास ऑफ सेल थिला एबे मास ऑफ सेल टा कोन ला डिवाइड हे दी प्रकार सेल हला गोटे आउटर लेयर सेल हला सेटा हला ट्रोफोब्लास्ट सेल एटा लिख परिबो ट्रोफोब्लास्ट लेयर और ट्रोफोब्लास्ट सेल्स लिख परिबो और ट्रोफोब्लास्ट cells है outer layer of trophoblast cells, and that is a inner mass cell. This inner mass cell is also called as embryoblast cell. ता माने तमरो जहा किछि डेवलपमेंट एम्ब्रियो रो हबो ए इनर मास सेल रो हबो. ट्रोफोब्लास्ट सेल टा हला तमरो मोस्टली एटा न्यूट्रिटिव, ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दबो, न्यूट्रिटिव एंड सपोर्टिव एटा मन रखितो एटा केवल न्यूट्रिशन दबो आ सपोर्ट दबो, या छड़ा आउ किसी दबो नहीं. ट्रोफोब्लास्ट सेल गिव राइज टू न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट, बट इनर मास सेल जो एम्ब्रियोब्लास्ट सेल एटा लेटर ऑन कोन करिवो एटा कोन करिवो तुमको डेवलप करिवो एवं एटा डेवलप करी कोन करिवो एम्ब्रियो फॉर्म करिवो, इट विल फॉर्म द एम्ब्रियो. ओके, अरे मु तो एपन तो देखिन रे तमरो मेसेज बॉक्स. मनस्विनी रथ, प्राची, प्रत्याशा बराल, स्मृति रेखा, मुतिरंजन जेना, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. चलो ओके, तो ये दीटा हेगला तमरो ट्रोफोब्लास्ट सेल हेगला, एपटे इनर मास सेल हे परबा और इनर सेल मास दीटा जिंस कहि परिबा. इनर मास सेल भी कहि परिबा और इनर सेल मास भी तमरो बुकिश लैंग्वेज लिखाई जोडा हेला लिखाई छी इनर सेल मास. इनर सेल मास हे परबा, इनर मास सेल जहा भी कहि परिबो हैला, और एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स. एबे ए जो कैविटी हला ए कैविटी हला ब्लास्टोसेल. ओके, नाउ जस्ट लेट अस सी एबे कोन कोन आउ डेवलपमेंट आदर हबो, आदर कोन डेवलपमेंट हबो नेक्स्ट स्टेज रे देखिबा. अच्छा, ए टिके एटी लाइट पडुछ नै कि हमें टिके एठी करबा दिस पोर्शन. ओके, नेक्स्ट स्टेज रे कोन हबो, या पर स्टेज रे कोन हबो देखो, सेकंड स्टेज आ पर स्टेज रे हम सेटा गले नेले हम ताको, ओ सॉरी ग्रीन कलर हेतला. चलो एटा मु बड़ बड़ सेल कर दूँ कहना होते टाइम नहीं आम पाखे चित्र रे टाइम पड़ेगा, तेणु मुझे जस्ट बड़ बड़ खाली सेल कर दूँ जस्ट जानिया पे तुम्हें है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. सो दिस इज आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट सेल. ओके, किसी असुविधा नहीं. इनर मास सेल जोड़ा अच्छी, दिस इनर मास सेल नाउ इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू लेयर. one outer layer of columnar cells. This is columnar outer layer of cells. This is the columnar cells, outer layer of columnar cells, and inner layer of cuboidal cells. एटा पिला माने तुम बुझी पारो एटा केमती कहलो, एटा को तुम बुझी चेष्टा करो, एटा गोटे बहुत क्रिटिकल पार्ट तुम बुझीबा पे.
एटा को बुझिया पे तुम चेष्टा जो करूछ एटा इट्स नॉट लाइक दैट कि एटा एमती गोटे 2 डायमेंशनल पिक्चर किसी ना एमती गोटे प्लेट थुआई तादर एमती एमती सेल अच्छी इट इज ए ग्लोब इट इज ए बॉल बुझी पारुछ एटा गोटे बॉलटे फॉर एग्जांपल कौन ये अच्छी धर यहाँ गोटे ओके सो लेट मी समथिंग इट्स लाइक ए बॉल तो बॉल माने आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ दिस येलो कलर सेल एटा तुमको एग्जांपल लाइन दूसरी माने एटा पूरा इन बॉल रे गोटे लेयर थी तले पुणी आउ गोटे लेयर थी केक देखिछ केक केक रे डिफरेंट डिफरेंट लेयर थाए ना नहीं फास्ट गोटे क्रीम लेयर थाए केक रे तापर गोटे लेयर थाए ब्राउन कलर रो तापर गोटे व्हाइट कलर तापर गोटे ग्रीन कलर डिफरेंट डिफरेंट लेयर थाए सो ये जो लेयर देखो ना कि एटा टोटल 3 डायमेंशन लेयर गुड़ा पूरा एमती थिबो बॉल रे एमती थिबो गोटे लेयर एटा हला कोन येलो कलर लेयरटा लंबा लंबा सेल गुड़ा एमती येलो कलर लेयरटा ता तले आउ गोटे जोटा पिंक कलर लेयरटा तो ये भाया थो बिकज इट इज ए ग्लो आम जहाँ भी पढ़ुचे ना ये गोटे ग्लोब को लेकिन आम पढ़ुचे इट्स नॉट दैट जायगोटा गोटे ग्लोब इट इज ए ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इट्स ए बॉल लाइक स्ट्रक्चर इट्स नॉट ए रिंग रिमेंबर जायगोटा गोटे रिंग नुह ये गोटे बॉल तेणु जहाँ भी आम पढ़ुचे यू कनसीव दिस ओके और यू रिसीव दिस in terms of what in terms of 3D picture not that कि 2D वाले हम देखिबे एमती 3D पिक्चर रे तमे एटा को ये करबो ता माने तुम एटा उल्टे भी मते एटा पूरा गोटे लाइन ए हल्दियाटा पूरा देखा जिवो बुझी पारलो ता माने एटा हेगला तमरो गोटे लेयर एटा गोटे लेयर एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज एपिब्लास्ट cells and this layer is called as hypoblast cells बुझी पारछ तामाने मु आको काटिबी मते केन देखा जिवो गोटे लेयर पूरा देखा जिवो हल्दियाटा ता तळको ए लेयरटा पूरा देखा जिवो एथरु साइड रु खाली टिकेटे देखा जिवो हैला माने एटा एम्ति एई टाइप रो रहिथिबो सो एपिब्लास्ट सेल एंड हाइपोब्लास्ट सेल तामाने से बॉल रो धर गोटे बॉल मु करछि ए बॉल करछि ए बॉल रु एतिक एरिया पूरा मु नै गेली पूरा पेरिफेरी रे एतिक एरिया नै गेली कोन एपिब्लास्ट ता तळे एतिक एरिया नै गेली हाइपोब्लास्ट एई बडा हिसाब करो एतिक एरिया हला पूरा पूरा टोटल एपिब्लास्ट ए तळ एरियाटा टोटल ढाला हाइपोब्लास्ट हला तो सेही हिसाब रे एपिब्लास्ट सेल एंड हाइपोब्लास्ट सेल दीटा तक मिसी कोन कोन दी एम्ब्रियोब्लास्ट सेल तापरे रहला ट्रोफोब्लास्ट सेल ए समय रे ट्रोफोब्लास्ट सेल भी एकुटिया रहबोनी ट्रोफोब्लास्ट सेल कोन करिवो से भी डिफरेंशिएट करिवो ये डिफरेंशिएट करके दीटा लेयर हबो कोन दीटा लेयर हबो देखो ए ओलिया गोटे लेयर हबो माने बिना बाउंड्री रो सेल माने मल्टी न्यूक्लिएटेड बिना बाउंड्री रो सेल विदाउट सेल वॉल मल्टी न्यूक्लिएटेड हम कोन कहू सिनसीशियल कहू ना नहीं आम जो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कौन कहू सिनसीशियल स्ट्रक्चर को सिनसीशियम को सो जेहेतु एटा सेही भलिया लेयरटा सो दिस इज कॉल्ड सिनसीशियो ए ट्रोफोब्लास्ट दीटा लेयर हला दिस इज कॉल्ड सिनसीशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड दिस लेयर ओरिजिनल ट्रोफोब्लास्ट जोटा आगु थिला दिस इज कॉल्ड एज साइटोट्रोफोब्लास्ट जस्ट ए मिनट लाने हेलो गुड इवनिंग सर हाँ सर गुड इवनिंग सर मोटे कॉलेज रे गोटे क्लास रे अछि बुझले कि मु क्लास सारी करूछि एमे आज तो 8 मान क्विज अछि हला कि ओके सो this is divided into two type of layer that is syncytial this trophoblast ऐसा कौन ला एडी कौन थिला ट्रोफोब्लास्ट थिला तापरे इनर सेल मास थिला नेक्स्ट स्टेज रे कौन हला ना ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड इनटू टू स्टेज टू पार्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट syncytial trophoblast finish एवं इनर सेल मास that is divided into two layer that is epiblast and hypoblast these are the two things develop okay this epiblast is also called as primitive ectoderm and the real ectoderm also form from this epiblast real ectoderm जो हमर अछि हम बॉडी रे तीनटा लेयर अछि ectoderm mesoderm and endoderm पढिथिबो where triploblastic and real ectoderm also come from these epiblast cells and this hypoblast is called as
primitive endoderm, primitive endoderm, but एटर हमर एंडोडर्म फॉर्म हुए नहीं, हाइपोब्लास्ट एंडोडर्म फॉर्म हुए नहीं, हाइपोब्लास्ट केवल हम फॉर्म हुए कौन ना हमर माने कौन सी लेयर हाइपोब्लास्ट फॉर्म हुए, टोटल तीन जगह लेयर एपिब्लास्ट भी फॉर्म हुए, एक्टोडर्म भी फॉर्म हुए, मेसोडर्म भी फॉर्म हुए, एंडोडर्म भी फॉर्म हुए एपिब्लास्ट लेयर, ठीक अच्छे। हाइपोब्लास्ट केवल फॉर्म हुए तुम यॉर्क सैकटा फॉर्म हुए, ओके। तो ये है तुम एपिब्लास्ट सेल, इवन हाइपोब्लास्ट भी हुए नहीं, यॉर्क सैकटा एंडोडर्मल सेल रू फॉर्म हुए, ये है एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट है दुईटा लेयर है। सो यहाँ गोटे डेवलपमेंट, या पर डेवलपमेंटा कौन हम, या पर डेवलपमेंटा कौन हम देख भल कि ध्यान दियो, आमर यहाँ कौन है, अच्छा यहाँ की कैविटी अच्छी, यहाँ कैविटी अच्छी कौन आमर ब्लास्टोसील अच्छी, एबी भी ब्लास्टोसील अच्छी, दिस इज फास्ट दिस इज फास्ट स्टेज, दिस इज फास्ट स्टेज, दिस इज द सेकेंड स्टेज, ओके, दिस इज द सेकेंड स्टेज। नाउ लुक एट द थर्ड स्टेज, एबे हम देखिबा आ पर स्टेज रे कोन, आ पर स्टेज रे कोन हबो, मैं आ गुडे चित्र करिया कथा न करके मैं आर ऊपर डेवलप करबा, देखिबा कोन हबो, आ पर स्टेज रे कोन हबो, थर्ड स्टेज रे कोन हबो, मैं गुडा लिखै दोछि, ए सब लिखै दोछि, थर्ड स्टेज रे कोन हबो, व्हाट हैपन इन द थर्ड स्टेज, ऑलरेडी तमे याको देखि परिबो, सेकंड स्टेज ऑलरेडी तमे वीडियो रे पर देखि परिबो रिप्ले करिकि, एबे मु पढौ थर्ड स्टेज को। नाउ कम टू द थर्ड स्टेज, व्हाट हैपन इन द थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज कौन हम देख पे ना, दिस ट्रोपोब्लास्ट, एटा कौन साइटोट्रोपोब्लास्ट, एटा तो सिंसिचियो ट्रोपोब्लास्ट ऑलरेडी ये अच्छी, सिंसिचियो ट्रोपोब्लास्ट बाहर अच्छी, ये जो साइटोट्रोपोब्लास्ट जो आउटर लेयर, दिस साइटोट्रोपोब्लास्ट इट गिव राइज टू इट डिवाइड इनटू लॉट ऑफ सेल्स, ये बहुत गुड़े सेल करेबो एंड दो सेल फिल इन दिस टोटल स्पेस, ए स्पेस को फिल कर देबे। सो कौन हम देखो, दिस साइटोप्लास्ट, दिस ट्रोपोब्लास्ट सेल और दिस साइटोट्रोपोब्लास्ट इट डिवाइड एंड प्रोड्यूस मेनी सेल्स, एंड इट कंप्लीटली फिल दिस ब्लास्टोसिल, ब्लास्टोसिल को फिल कर दबो पूरा, बहुत गुड़े सेल है कि ब्लास्टोसिल को फिल कर दबो। Okay, and these are called as extra embryonic mesoderm। सो ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कौन हम, यहाँ कौन हम, दिस ट्रोपोब्लास्ट, नाउ व्हाट हैपन थर्ड स्टेज रे कौन हम ना, सिंसिचियो ट्रोपोब्लास्ट तार रहिला, साइटोट्रोपोब्लास्ट कौन करिवो चारियाडे सेल मल्टीप्लाई, एडी भी सेल दबो, हियर आल्सो इट विल प्रोड्यूस सेल्स, बट एडी जेहेतु एम्ब्रियोब्लास्ट सेल अछि बेसी लेयर दे परिबोनी, एडी 2-3 लेयर दे देला, ये लेयर रहिला एडी बस आउ हे परनी, जोडी ताको खाली मिलला सेडी सेल भर्ती कर देला, एडी ताको खाली मिलला एई जगह रे सेल पूरा भर्ती कर देला, एंड दैट जो सेल भर्ती कर देला एटा को कहते एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। कहीं ना मेसोडर्म टा गोटे डिफरेंट जिनस, मेसोडर्म टा तो एम्ब्रियो रु बाहर, बिकॉज वी हैव गॉट 3 लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, दैट विल डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियो, बट दिस इज नॉट एम्ब्रियोनल पार्ट, दिस इज ए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एडी एम्ब्रियोनल पार्ट ला एटी सर जीवो, बिकॉज दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ए जो हाइपोब्लास्ट एपिब्लास्ट मिसिक एटा गोटे डिस्क भलिया रही, एटा को कहते एम्ब्रियोनिक डिस्क, एम्ब्रियोनिक डिस्क, क्या एम्ब्रियोनिक डिस्क कहते ना, एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट को मिसेक दुईटा लेयर को आमर कह जाए एम्ब्रियोनिक डिस्क, तेणु आपको एम्ब्रियोनिक डिस्क बाहर ये डेवलप होती, तेणु यहाँ कह एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। नाउ दिस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म यहाँ जो अच्छी ये कौन हम एगेन डिवाइड हम, गुड़े प्रोसेस आज रही तुमको मन रखा पड़ो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो लेयर अच्छी ये तुमको डिवाइड होगी दुईटा लेयर हो, मझिरू स्प्लिट हम, स्प्लिट गोटे कैविटी डेवलप हम, देख मझिरू स्प्लिट है एंड इट स्प्लिट एंड some cells move upward, some cell move downward and it form a cavity over here.
So this extra embryonic mesoderm, it form a cavity over here. So it will form a cavity like this. पूरा गोटे cavity बनेबो, and this cavity is called as extra embryonic coelom. This cavity is called as extra embryonic coelom. And ये जो extra embryonic mesoderm तले रहला ऊपर रहला यार भी different ना रहबो सेटा तुम दरकार नहीं, but still जदि मन रखि पारे मन रख एटा तुमर को आबो सोमाटो प्लूरिक ट्रोफोएक्टोडर्म एडा हबो स्प्लांको प्लूरिक ट्रोफोएक्टोडर्म हला। तो कौन है ना सोमाटो बाहरटा है सोमाटो प्लूरिक ट्रोफोएक्टोडर्म, भितरटा है स्प्लांको प्लूरिक ट्रोफोएक्टोडर्म, एंड ता भीतर जो कैविटा बोला ताको कहला एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम। एटा सब प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड इट गिव नरिशमेंट। अच्छा एडी कौन हबो या पर कौन हबो ना दिस hypoblast layer it will again form another cavity over here. A hypoblast layer ru आउ गोटे cavity एठी गोटे cavity बनिबो, it will give rise to some columnar cells and it will form another cavity here or another sac here, and this is called as yolk sac. Basically this yolk sac it protect the embryo because embryo एडी बनिया को जाउची हमर आगु को embryo एडी बनिया को जाउची, तनो ये yolk sac ता करो embryo को protect करिवो हला, एवं yolk sac ता embryo को nutrition भी दबो. In human this yolk sac is not well developed, but in other this yolk sac is developed because human रे placental connection था तो nutrients placenta रो मिल जाए. yolk sac रो काम होला ओनली खाली आरबीसी परबीसी बनेबार टिके हेल्प करे, अदरवाइज एते किछि एते इंपोर्टेंट प्रोमिनेंट रोल नाही ह्यूमन रे हला. सो एटा हेगला तोर यॉक, एटा हेगला तमरो यॉक सैक, ठीक अछि, एटा बनि जेबो यॉक सैक. नाउ दिस एम्ब्रियोनिक डिस्क इज देयर. तो एबे कोन कोन हमर बनि गला, हमें कोन कोन पाइले ना वी फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम, वी फॉर्म this mesoderm, extra embryonic mesoderm. Now we form the what, we form the yolk sac also. एबे कोन हबो आउ दुईटा स्ट्रक्चर बनिबो, आउ दुईटा स्ट्रक्चर कोन बनिबो ना amnion आउ chorion, दुईटा मेम्ब्रेन बनिबो. मोस्ट इंपोर्टेंट मेम्ब्रेन दुईटा बनिबो amnion एंड chorion. व्हाट हैपन ना जस्ट एडी कंसीडर करो ए जो सेल्स अछि या ऊपरे ट्रोपोब्लास्ट सेल्स अछि, this trophoblast cell and this epiblast cell या भितरे गोटे बनिबो cavity that is called amniotic cavity. Just let me draw it again. एटा हे गला, एटा 3 नंबर पॉइंट हे गला. एबे 4 नंबर पॉइंट रे हम देखिबा कोन हबो. एबे हम देखिबा 4 नंबर पॉइंट रे देखो बड़ करी करिबा. एटा हे गला, एडी हमरो एडी गोटे लेयर अछि एपिब्लास्ट, epiblast layer is there. Okay, already एटा हमरो अछि कोन ट्रोपोब्लास्ट लेयर अछि. हला एडी हाइपोब्लास्ट लेयर अछि. एवला अछि. There is a cavity form over here. Some trophoblast cell they will form some special cells
called amniogenic cells, and these amniogenic cells above and epiblast cell below, it will form a what? It will form a cavity. This cavity is called amnion or amniotic cavity, and it contains amniotic fluid which is nutritive and act as a shock absorber, containing amniotic fluid. So on the above or on the top of this epiblast, still देखो आम एपर्यंत एम्ब्रियोब्लास्ट विषय किसी कथा होने, आम बाहर डेवलपमेंट विषय कथा हो। अच्छा याद भी कौन है ना, ये भी गोटे तुम यॉर्क सैक भी डेवलप हो ऑलरेडी। यॉर्क सैक इज ऑल्सो देयर, ये यॉर्क सैक भी डेवलप होची है। ये सब मास सेल सब अच्छी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म अच्छी, ये सब अच्छी, ये सब तार रहा है। नाउ व्हाट हैपन here at the top of the embryoblast layer गोटे कैविटी डेवलप हो गला। से कैविटीटा कौन ला जरा पूरा फुटबॉल अच्छी, ये लेयरटा रहा एपिब्लास्ट, ता तले रहा हाइपोब्लास्ट। एपिब्लास्ट ऊपर जो लेयरटा ता भीतर गोटे कैविटी होगा, ता भीतर पानी रहा। आम यदि मारिबा फुटबॉलटा ऊपर को से पानी रे माड़ हम है, तो ये लेयर पर्यटन पहुँचबनी। तो यहाँ गोटे शॉक अब्जर्वर है, ऊपर ये प्रोटेक्ट कला, तलू एम्ब्रियो सैक प्रोटेक्ट कला। तो यहाँ गोटे प्रोटेक्टिव लेयर होगा, आमनियोटिक कैविटी और आमनियोटिक फ्लूइड ये डेवलप होगा है। तापर कौन ला आमनियोटिक फ्लूइड डेवलप होगा, ये डेवलप होगा तापर कौन ला ना अराउंड एट द दिस ट्रोपोब्लास्ट लेयर जो लास्ट लेयर ट्रोपोब्लास्ट लेयर, हियर आल्सो इट डेवलप ए कैविटी और इट डेवलप ए मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड कोरियन। ये गोटे मेम्ब्रेन डेवलप हो दैट इज कॉल्ड कोरियन। So the outside, the trophoblast cell or the outer side, it form a membrane that is called कोरियन। सो ये amnion हो गला, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मोटा मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन डेवलप हो गला। दिस मेम्ब्रेन आउटसाइड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज कोरियन। amniotic cavity कोड हैला, दिस इज ओनली ऑन द टॉप ऑफ एम्ब्रियो, पूरा एम्ब्रियो रा टॉप रेटा हैला। बट कोरियन टा कोन हबो, इट एनसर्कल पूरा एम्ब्रियो को, एनसर्कल द एम्ब्रियो, एनसर्कल द एम्ब्रियो। कोरियन कोन करिवो, एम्ब्रियो टा को पूरा एनसर्कल करिवो। एवं कोरियन रा काम कोन ना, इट सेक्रेट वन हार्मोन दैट इज HCG, कोरियोनिक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। सो ये कौन करिवो, कोरियन टा कौन करिवो, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन करिवो। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन टा कौन ना, दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ LH। This is similar to that of LH and it maintains the corpus luteum. Maintain the corpus luteum। क्या पिट्यूटरी मुझे कहती 28 दिन पर पिट्यूटरी कार्पस लुटेम को मेंटेन करबनी। जदि पिट्यूटरी कार्पस लुटेम को मेंटेन करबनी, किए तो गोटे कार्पस लुटेम को मेंटेन करा दरकार। किए मेंटेन करियो कार्पस लुटेम को? कार्पस लुटेम को मेंटेन करिवो तमरो किए ना कोरियन, बाय गिविंग ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। बुझिला? तो कौन आमर हेगला तले, आमर एमनियन फॉर्म हेगला, कोरियन फॉर्म हेगला। तो ये पर्यंत आम कौन देखिले ना, 3टा स्टेज गला, 4टा स्टेज गला, आम देखिले कौन ना एमनियन फॉर्म हेगला, कोरियन फॉर्म हेगला, यॉर्क सैक फॉर्म हेगला, सब अच्छे। एबे एम्ब्रियोब्लास्ट अच्छी। एंड आउ गोटे जिन मन रख पिला माने, एमती किसी स्टेप वाइज फॉर्म हुए, सबू जाक एका बेले हुए है। एंड इट सो फास्ट, दिस एम्ब्रियोजेनेसिस इज सो फास्ट, इट कैनॉट बी एनालाइज कि तुमको कूड़ा आग कूड़ा पछ से ये करहबनी। सो आम गोटे बुझुचे स्टेप वाइज, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग स्टेप वाइज व्हाट आर द चेंजेस गोइंग ऑन, कौन कौन चेंजेस होची। बट ये सब जिनस गुड़ा एका बेले हुए, इट्स ए वेरी फास्ट प्रोसेस है। तो यहाँ होगा आम एमनियोटिक कैविटी होगा। तो एमनियोटिक कैविटी काम कौन ना, ये फ्लूइड रहा पूरा कौन कर फ्लूइड टाक कौन कर प्रोटेक्ट कर रखिबो, काहाकू ना एम्ब्रियो टाको प्रोटेक्ट कर रखिबो है। सो दिस इज द एमनियोटिक फ्लूइड। ता तले रहा यॉर्क सैक, रहा यॉर्क सैक टिके
एते प्रोमिनेंट नो इन केस ऑफ ह्यूमन बट अदर्स रे प्रोमिनेंट है यॉक सैक दिस यॉक सैक इज आल्सो ह्यूमन रे स्टार्टिंग रे जोटा था प्राइमरी यॉक सैक तापर कोन हुए ये सेल गुडा तो कंप्रेस करके सेकेंडरी यॉक सैक कर दियंती हला एनीवे एबे हे गला एबे हमें देखिबा यार कोन चेंजेस हो कारण ए पर्यंत हमें एते कथा हमें कथा होलेनी कि ए पर्यंत हमें यार चेंजेस विषय कथा हैने एम्ब्रियो ब्लास्ट सेल रो चेंजेस विषय कथा हैने एम्ब्रियो केमिति बनिवो हाउ द एम्ब्रियो विल फॉर्म दैट विल डिस्कस ना एबे कौन हम देखो दिस एपिब्लास्ट सेल इज देयर हाइपोब्लास्ट सेल इज देयर नाउ व्हाट हैपन देयर इज ए चेंज हैपेंस दैट इज कॉल्ड ए प्रिमिटिव स्ट्रीक विल बी फॉर्म नेक्स्ट फोर्थ रे हमें नंबर कौन ना ए प्रिमिटिव स्ट्रीक is formed just over the ectoderm or epiblast, not ectoderm, this is epiblast. Epiblast ऊपर गोटे प्रिमिटिव स्ट्रिक फॉर्म हो प्रिमिटिव स्ट्रिक फॉर्म हम तापर कौन हम मॉर्फोजेनेटिक्स हम और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट हम चलो तापर पर पढ़ा आगे प्रिमिटिव स्ट्रिक विषय बुझे प्रिमिटिव स्ट्रिक माने केमी तो बुझेबी फॉर एग्जांपल प्रिमिटिव स्ट्रिक ओके धर गोटे सपोज दिस इज ए ट्रे ए ट्रे रे मु पूरा अटा रखी पूरा फुल अटा फुल कर दी एगुड़ा सब अटा गुड़ा है दिस इज ट्रे फुल ऑफ विथ सी आई एम शोइंग द टीएस एटा हमर गोटे साइड रे देखुतले आई एम शोइंग यू like this I am just cutting this football and this cutting this football here this is a football I am cutting here I am cutting this football see I am cutting this football here बुझे को चेष्टा कर एडी मु फुटबॉल काट देली काट दे के ए पाटा फिंग देली एटा को नै के तुमके एमती देखौजी सो देखो गेडी में पॉइंट ए फुटबॉल तो काटी करी एटा तुम देखौजी तुम कोन देखा जीवो तुम देखा जीवो कोन ए बेला गोटे देखा जीवो ना नहीं ए बेला एडी कोन तुम देखा जीवो ना ए सेल गुडा देखा जीवो हल्दी हल्दी सेल गुडा देखा जीवो छाड़ मु आ परे आसीबी एबे मु कोन कहतली गोटे थाली नैची थाली रे एक ट्रे नैची ता दे अटा पुले रखिछि हला पूरा साइज करे अटा रखिछि हला थाली नै कि कोन करछि पूरा साइज करके अटा रखिछि बुझी हला गेडी में पॉइंट न साइज करके अटा रखिछि एबे मु कोन करबी ए जो अटा अछि पूरा साइज हे कोठी किछि हेनी मु कोन करबी एबे मु से थाली ऊपर थाली थुआइछि तापर अटा थुआइछि मु नै कोन करबी से अटा ऊपर कोन करबी ए आंगुरटा नेबी गोटे जगह रे एन दबे देगी कर देबी कोन हबो अटा नेली अटा ऊपर एन आंगुरटा दबे देली काट देली गोटे जगह डिप्रेशन हो कि नहीं देखो अटा नहीं एटा देखा जाउछि कि नहीं तुमको बे तुम तो कंप्यूटर भी बंद हो गला टाइम पड़ेला बिल्कुल देखा जाउनी वेट वेट कोड करवा भल देखा जीव र गोटे मिनिट अच्छा एड करवा एड देखा देखा एड गोटे मु थाली नेली ए थाली नहीं कि आधे मु अटा रखी और पूरा साइज करके पूरा अटा गुड़ा भर्ती करदेली है से अटा गुड़ा सब भर्ती रही एबे भर्ती रही एबे ये अटारे ये अटा थाली भर्ती रही पूरा तो पूरा मुझे साइज कर रखी है देख ये सी इयर ये लाइट पॉइंट देखा क्लीयर ये पूरा अटा भर्ती रही मुझे कौन कली आंगुठ नहीं हाथ मारदेली ये गोटे जगह दबे देली दबे काटदेली जो जगह दबे काटदेली से जगह दबीगला ना नहीं से जगह दबीगला से कौन डेभलप होगा गोटे 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 गात डेभलप होगा जोटा कौन कहते गोटे होल मैंने गोटे डिप्रेशन होगा गोटे दबीगला गोटे जगह ये जो जगह दबीगला ये जो जगह दबीगला नहीं कि यहीटा को कहते प्रिमिटिव स्ट्रिक गोटे स्ट्रिक गोटे गोटे गार पड़गला कहाँ पर गार पड़ला ना यापर यार सरफेसटा यहाँ मुझे काटी आगे उल्टे देखली तुमको केम देखा धर यहाँ मुझे उल्टे देखेबी तुमको केम देखा देख
धर एटा को बर्तमान मु काटी दूची एटा को मु टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन नौची ट्रांसवर्स सेक्शन नेले केन देखा जो देखो एटा मु काट देजी एटा तुमको ए बॉल टा को तुमको मु कटा एंड एंड देखौची तो केन देखा जीवो तुमको ये पूरा टोटल रे हल्दी हल्दी सेल देखा जीवो कि नहीं पूरा हल्दी हल्दी सेल देखा जीवो पूरा हल्दी हल्दी सेल सब देखा जीवो ए लंबा लंबा देखा जीवो नहीं कारण लंबा एमिति लंबा लंबा आसना किंतु काटी देले तो सब गोल गोल देखा जीवो कारण हम टीएस नौचे ना पूरा गोल गोल सेल देखाला कोडा एटा ना एटा सब एपिब्लास्ट सेल दिस इज ए क्रॉस सेक्शन CS क्रॉस सेक्शन एगुड़ा नेला एगुड़ा तुम देखागला कौन ना दीज आर ऑल एपिब्लास्ट सेल देखाउछ हमको एपिब्लास्ट एंड एपिब्लास्ट तले अछि हाइपोब्लास्ट तेणु हमको ता पछकु हाइपोब्लास्ट टिके देखा जीवो अधा हाइपोब्लास्ट को तो ये मारी बच्ची ऊपर आउ गोटे गोटे लेयर लास्ट लेयरटा हाइपोब्लास्ट हमको देखा जीवो एटा को कल्पना कर एटा को जो भाव तमे यदि मु गोटे सेक्शन काटिबी केन देखा जीवो how this section will be seen to me एटा हाइपोब्लास्ट देखाला एबे कोन हो ए जो मास अछि आ गोटे प्रिमिटिव स्ट्रिक डेवलप हो धर प्रिमिटिव स्ट्रिकटा एवडा डेवलप हैला एवडा गोटे प्रिमिटिव स्ट्रिकटा डेवलप हैला एंड ए प्रिमिटिव स्ट्रिकटा जो डेवलप हैला एटा गोटे एमती डेवलप हो ना कि ए गोटे शेप रे डेवलप हो फॉर एग्जांपल देखो एवडा गोटे शेप रे डेवलप हो बुझी पारल ए जो लेयर अच्छी एपिब्लास्ट लेयर अच्छी एपिब्लास्ट लेयर उपरे एपिब्लास्ट लेयर उपरे प्रिमिटिव स्ट्रिक्टा डेवलप होबो एटा एवं एटा ए भलिया शेप रे डेवलप होबो तालारा जिंदी चाबी जिंदी पुरंदे ने सिंदी स्टेप रे डेवलप होबो बुझी हैला नाउ ए जो प्रिमिटिव स्टेप जदी एमिन देखिबा केन देखा जीवो आधर देखले केन देखा जीवो एटो एन डिप्रेशन देखा जीवो ना नहीं ए डिप्रेशन देखा जीवो एमतिया देखो जदि आम 3D रे देखले एमती देखा जीवो डिप्रेशन है 2D रे देखा केमती डिप्रेशन एम देखा जीवो ता माने ए एरिया रे जो दबिक रही देखा जीवो डिप्रेशन है ए डिप्रेशन देखा जीवो अच्छा ये रहिला हाइपोब्लास्ट ये रहिला एपिब्लास्ट ए एपिब्लास्ट सेल कोन हबो ए डिप्रेशन प्रिमिटिव स्ट्रिक हैला फास्ट हैला कोन प्रिमिटिव स्ट्रिक फॉर्म हबो तापर कोन ला अच्छा हमर 4 नंबर 5 नंबर पॉइंट कोन उठे थिला देखिबो जाबे थिला देन कोन हबो प्रिमिटिव स्ट्रिक फॉर्म हबो प्रिमिटिव स्ट्रिक फॉर्म ठीक अच्छे प्रिमिटिव स्ट्रिक जो फॉर्म हो गला वंस प्रिमिटिव स्ट्रिक फॉर्म हो माने डिप्रेशन हो गला ये जो डिप्रेशन हो गला ये मॉर्फोजेनेटिक मोमेंट हम मॉर्फोजेनेटिक मोमेंट कौन हम एपी जो एपिब्लास्ट सेल भितर को पशिवा स्टार्ट कर भितर को पशिवा स्टार्ट कर तुम केबे गोटे मन पका समस्ते तुम प्राय ग्राइंडर जो आम मिक्सी मिक्सी रे आमर ये बनवा डब बनला बेले देखियो कौन बैटर बनवा देखी प्राय मिक्सी रे प्राय आम कौन करूँ आम सब मिक्सी कला बेले जो से मिक्सिंग करूँ बैटरटा भितर बुलू थाए आम खोलिकी देखू मजा लगे देखा सब है मु भी देखी तुम मैंने देख कौन हुए देख से मिक्सी रे देख चारिपटे सब टे हाइट मझे गोटे गोटे डीप थी एंड से ऊपर जिन गुड़ा सब भितर एमती जिन पशुव हैव यू एवर मार्क्ड और नॉट मार्क कर तुम देख एमती सब पशुव माने से मिक्सी रे एने बुलूथिबो मिक्सीटा बुल माने मिक्सी भितर बुलूथिबो देखिबो एमती तुम देखिबो से बैटर को देखिबो ता भितर गोटे एमती गोटे डीप गात गोटे थिबो एंड से गात भितर सराउंडिंग जिन गुड़ा सब ऊपर जिन तलक पशुव से भाया ये जो स्ट्रिकटा हो गला ये स्ट्रिक रे ये एपिब्लास्ट सेल मूव इन ता माने कौन करिवो ये एंडोडर्म ये जो हाइपोब्लास्ट दबे तलू दब ये हाइपोब्लास्ट को पेली देला कुआडे तल को पेल देला ये हाइपोब्लास्ट आड़े पळे आसला हाइपोब्लास्ट तल पळे आसला एबे कोन हला एठू किछि एपिब्लास्ट मो रेड कलर देखौजी त मु बुझी परिबो किछि एपिब्लास्ट आ भितरु पसिया स्टार्ट कला सम एपिब्लास्ट विल एंटर एंड स्टे ओवर द हाइपोब्लास्ट किछि एपिब्लास्ट सेल इनवाज ताको कहंदी इनवाजिनेशन कहंदी किछि एपिब्लास्ट सेल इनवाजिनेट करिकरी पळे आसिकरी हाइपोब्लास्ट को दबे देला तळको एवं हाइपोब्लास्ट ऊपर बसिगला किछि एपिब्लास्ट सेल एंड ए जो एपिब्लास्ट सेल इनवाजिनेट करिकरी आसिक हाइपोब्लास्ट ऊपर बसिला एटा बनेला कोन ना आम एम्ब्रियोर एंडोडर्म बनेला आम एम्ब्रियोर एंडोडर्म बनेला ता माने आम बॉडी रे प्रथम क्वेश्चन पड़े
प्रथम लेयर कौन बने आम बॉडी रे ना आम बॉडी रे फर्स्ट लेयर बने एंडोडर्म वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल एपन तीन टा लेयर हमर बनिनी तीन टा लेयर आग बनला परे सिना सब लेयर अलग अलग सेल अलग अलग ऑर्गन बाहरिबो एपन तीन टा लेयर बनिनी तीन टा लेयर जो बनिया प्रथम लेयर कौन बनला ना एंडोडर्म बनला केमती बनला एंडोडर्म ना ए एपिब्लास्ट सेल बुली बुली कर आसिक एडी सब जमा है ये एपिब्लास्ट सेल गुड़ा एडू एमती प्रिमिटिव स्ट्रिक बाटे प्रिमिटिव स्ट्रिक देके भितर को इनवाजिनेट कला कौन हम ना एपिब्लास्ट सेल्स इनवाजिनेट टू फॉर्म एंडोडर्म एपिब्लास्ट सेल गुड़ा एडी इनवाजिनेट कला भितर को पशिला पशि कौन कला एंडोडर्म आग बनेला कोड बनेला ना हाइपोब्लास्ट को तळु दबे देला ता ऊपर एंडोडर्म बनेला सो फास्ट एंडोडर्म बनला तापरे जो हैला किछि सेल कोन एंडोडर्म बनला परे आउ किछि सेल कोनला आसिकरी एंडोडर्म ऊपर बसिला आउ किछि सेल आसिकरी एंडोडर्म से एपिब्लास्ट सेल आसिकी एंडोडर्म ऊपर बसिला एंड दे विल फॉर्म द मेजोडर्म दे विल फॉर्म द मेजोडर्म ये जो सेल आसला ये बसला बनला मेजोडर्म फाइनली जो एपिब्लास्ट सेल ऊपर रही गला एंडोडर्म आउ मेजोडर्म बनला परे आउ जो एपिब्लास्ट सेल ऊपर रही गला दे विल फॉर्म द एक्टोडर्म ता माने आमे देखिबा आम बॉडी रो एक्टोडर्म मेजोडर्म आउ एंडोडर्म ऑल थ्री लेयर्स आर कमिंग फ्रॉम एपिब्लास्ट ओनली बहुत पिला भावती जेहेतु हाइपोब्लास्ट को हमें प्रिमिटिव एंडोडर्म बोली कहू क्वेश्चन आसे एंडोडर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट आउ कौन थी पिला हाइपोब्लास्ट लिखि दियंती तले अछि तो तले हाइपोब्लास्ट लिखि दियंती बट नॉट दैट एक्टोडर्म हो मेजोडर्म हो किंबा एंडोडर्म हो ऑल लेयर्स आर डेवलप फ्रॉम द एपिब्लास्ट सेल ओके तो एटा हैला एक्टोडर्म बनी गला मेजोडर्म बनला एंडोडर्म बनला एवं आउ गोटे क्वेश्चन भी आसे बहुत थोड़ा आसी एथरो तमरो नीट रे आसी क्वेश्चन जे व्हिच इज द फर्स्ट लेयर फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस और ड्यूरिंग मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट एंड मन गीत दिस मूवमेंट ऑफ एपिब्लास्ट सेल और इन्वाजिनेशन ऑफ एपिब्लास्ट सेल टू फॉर्म दिस एक्टोडर्म मेजोडर्म एंड एंडोडर्म इज कॉल्ड एज मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ये सब टर्म याद रखियो फिफ्थ रे कौन है प्रिमिटिव स्ट्रिक है फिफ्थ रे कौन है ना मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट हैपेंस मॉर्फोजेनेसिस और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट that means morphogenetic movement means it will form first endoderm then mesoderm then ectoderm then these layers will later give rise to different structures like ectoderm will give rise to skin hair okay then your ectoderm skin then hair then what else and many other part of the body तो देखिया पड़िबो हला then endoderm तमर जेमति हला तमर endoderm कोन liver तमर epithelium of the inner alimentary canal epithelium of the trachea bronchi ये सब उडा हला endoderm mesoderm रे केला muscles bones reproductive system except prostate gland all the reproductive system they are mesodermal yes mesodermal so like this ectoderm will give rise to some structures yes ectoderm रे बोलुथली जोडा nervous system total nervous system is ectodermal origin so ectodermal किछि जिंस दबो mesodermal किछि जिंस दबो endoderm किछि जिंस दबो blood cells they are mesoderm हला blood cells bones हला एडा सब mesoderm रो ठीक अछि तो तीनटा लेयर जो हे गला all these three layer give rise to the whole body हमरो पूरा बॉडी दबो बुझिला this is embryogenesis by that time what happen या भीतर आउ कोन हबो ए जो बाहर लेयरटा अछि कोरियन ए जो कोरियन अछि this कोरियन will form finger like projections this कोरियन will form finger like projections by that time ये सब हो ये भी होथिबो and these finger like projections are called as chorionic villi chorionic villi and this chorionic villi it enters into the
मैटरनाल ब्लड सर्कुलेशन ये कौन करिवो मदर जो एंडोमेट्रियम अच्छी मदर यूट्रस जो एंडोमेट्रियम अच्छी ये एंडोमेट्रियम ब्लड सर्कुलेशन सहित कोरियोनिक विलाई इट विल मेक ए इंटीमेट कांटेक्ट एंड इट विल फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लासेंटा एटा कौन करिवो और दिस कोरियोनिक विलाई इट लेटर ऑन गिव राइज टू द प्लासेंटा जो प्लासेंटा की हमर एम्ब्रियो को सपोर्ट दबो एटा एक्चुअली एई पटे रिफ्लेक्ट होज बिले म एट देखले बट दिस वन इज दिस साइड हला ए साइड काना एम्ब्रियोटा ए साइड रही कोरियोनिक विलाई दिस नॉट दिस साइड जेहेतु रिफ्लेक्शन हो देखा जाए बोले मेडिकली सो एडी कोरियोनिक विलाई हैला एंड दिस कोरियोनिक विलाई विल अटैच विथ द मदर्स एंडोमेट्रियम मार एंडोमेट्रियम से अटैच हो एंड एंडोमेट्रियम से अटैच कौन करिवो सेडी कौन करिवो इट फॉर्म ए प्लासेंटा एंड फ्रॉम दैट प्लासेंटा इट विल डिराइव द फूड एंड इट विल गिव राइज टू इट्स excreta to the mother's blood hala and this placenta will attach the placenta hala and the placenta will attach to the embryo or to the fetus through a cord which is called umbilical cord. So umbilical cord la it contain placenta, it contain umbilical arteries, it contain umbilical veins, all they are combined together to form the umbilical cord जोटा कि after birth हम umbilical cord को काटी दो ठीक अछि. So this is all about the morphogenetic movement or embryogenesis of the human being hela. I hope बुझी पारथिबो but still some level of criticality is there but you need to understand it, you need to think over it, read over it multiple times, then you can understand कौन हम चेंजेस हला म आउ थरे जस्ट तुमको खाली हाईलाइट कर दोची कौन चेंजेस हला ना हमरो फर्स्ट कौन हला ना हमरो गोटे मास ऑफ सेल बनेला स्टेजेस मन रखियो फर्स्ट सेल कौन थला हम गोटे एडी रिवाइज करिवा फर्स्ट सेल कौन थला फर्स्ट हमर बनला मोरुला फर्स्ट मोरुला बनला एटा गोटे मलबेल शेप तापरे बनला हमर ब्लास्टुला ब्लास्टुला बनला परे ब्लास्टोसील डेवलप होला तापरे कोन ला ट्रोफोब्लास्ट हैला आउ कोन हैला ट्रोफोब्लास्ट को डिवाइड किए से वाला तापरे एम्ब्रियोब्लास्ट हैला और एम्ब्रियोनिक डिस्क हैला तापरे एम्ब्रियोनिक डिस्क रे तमर कोन रहला ना एपीब्लास्ट रहला आउ हाइपोब्लास्ट रहला तापरे एटा हैला परे ट्रोफोब्लास्ट को डिवाइड की मल्टीपल डिवीजन हैला ट्रोफोब्लास्ट सिंसिचियो ट्रोफोब्लास्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट तापरे पुनी साइटोट्रोफोब्लास्ट डिवाइड हेकरी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मास देला एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म बनेला एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म स्प्लिट हैला स्प्लिट की बनेला कोन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलम बनेला तापरे कोन ला ना हाइपोब्लास्ट सेल रु हमरो बनेला कोन यॉक सैक बनेला तापरे कोन ला ना ऊपरे आम्नियोजेनिक ट्रोफोब्लास्ट कोन कला आम्नियोजेनिक सेल बनेला एवं आम्नियोजेनिक सेल आउ तमरो एपीब्लास्ट मझरे आम्नियोटिक कैविटी बनेला आम्नियोटिक कैविटी रे आम्नियोटिक फ्लूइड रहला जो आम्नियोटिक फ्लूइडटा न्यूट्रिशन दबो एवं आकु प्रोटेक्शन करिवो एम्ब्रियो को ए सब बनि गला ए सब बनिया भितरे कोन ला एम्ब्रियोब्लास्ट भी डेवलपमेंट हैला एम्ब्रियोब्लास्ट कौन डेवलपमेंट हैला ना एम्ब्रियोब्लास्ट डेवलपमेंट कोन ला ना एपीब्लास्ट सेल रे गोटे प्रिमिटिव स्ट्रिक हैला आ गोटे समान था प्रिमिटिव स्ट्रिक विल डिसाइड व्हिच साइड द हेड ऑफ द एम्ब्रियो विल बी देयर व्हिच साइड द टेल ऑफ द एम्ब्रियो विल बी देयर एंड व्हिच इज द राइट साइड व्हिच इज द लेफ्ट साइड ये जो प्रिमिटिव स्ट्रिक हम बनेले ए प्रिमिटिव स्ट्रिक को हम डिसाइड कर परबा एटा एम्ब्रियो रो हेड हबो एटा राइट हबो सॉरी हमर माने एटा लेफ्ट हबो दिस इज लेफ्ट दिस इज राइट and this is the tail or leg side jaa bhi kabo this primitive side decide the polarity of the embryo ro polarity को decide के करिवो primitive streak decide करिवो तो एटा primitive streak हे गेला primitive streak हला परे कोन हबो morphogenetic movement हबो morphogenetic movement माने epiblast will pushed in or epiblast will invaginate in केमती मन पके दबो तमर से मिक्सी भीतर जेमती बैटर उडा भीतर को इमेजिनेट करते है सेटा गोटे पॉइंट रे इमेजिनेट करते है मिक्सी रे बैटर उडा कोन बुलुची बेले गोटे पॉइंट रे इमेजिनेट करते है एटा पूरा होल लेंथ ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रिक रे इमेजिनेट करिवो पूरा प्रिमिटिव स्ट्रिक रे होल लेंथ रे एमती इमेजिनेट करो सेटा एमिति इमेजिनेट करते है एटा एमिति इमेजिनेट करिवो कोडा जोटा हमर एम्ब्रियोजेनेसिस रे एपीब्लास्ट सेल भीतर को इमेजिनेट कला एपीब्लास्ट सेल कोन करिवो हाइपोब्लास्ट सेल को तळ को पुश कर दबो एंड हाइपोब्लास्ट सेल ऊपरे गोटे लेयर एपीब्लास्ट सेल रहि जीवो दैट इज कॉल्ड द एंडोडर्मिस तेनु एंडोडर्म फास्ट डेवलप हो कोन एंडोडर्म डेवलप होला परे आउ किछि सेल आसीबो एंडोडर्म ऊपर रहि गेला एपीब्लास्ट आउ एंडोडर्म को भीतर पैक कर देला एंड दोस सेल्स विल बिकम मेजोडर्म
तापर फाइनली जो एपिब्लास्ट सेल रहा आउ इनवाजिनेट कर परिबनी कोन पूरा पैक हेगला दो सेल्स विल रिमेन एज एक्टोडर्म. So now the three layers are formed, ectoderm, mesoderm and endoderm, and this stage is called gastrula stage. Now these three layers will give rise to three different type of organs. Jemti ki ectoderm will give rise to nervous system, skin, all these things. Endoderm will give rise to some structures. Mesoderm will give rise to some other structures. Okay. So these are all about your embryogenesis. I hope you understand. नॉलेज बारंबार बारंबार वीडियो को ये करके देखिबो, वीडियो को रिवाइंड कर देखिबो एंड यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक अछि, ठीक अछि. देन देखा हबो नेक्स्ट नुआ किसी चैप्टर रे देखा हबो तुम सहित. चलो बाय.